In this video, I am giving information on jaundice disease. It is a disease related to the blood and cardiovascular system. I already spoke on the anemia, high blood pressure, which are all related to the diseases of blood and cardiovascular system. You know, cardiovascular system, the heart and um, veins and arteries and blood vessels all are related to the. It is a closed circular system in the humans, and I already um, told you in the other videos which I have earlier posted. But in this video, I will give information on the jaundice and main characteristics of the jaundice diseases and what are the treatment, especially related to the by the cure of the herbal plants and diet and briefly about diets and other regimens. You know, jaundice is characterized by the appearance of the yellowness in the eyes, um, in skin, uh, eyes and skin. As you see last in the lecture, anemia is the paleness in the body or skin. But here is the especially in eyes jaundice diseases characterized by the paleness in eyes and skin. And in Ayurveda, it is called kamala, and it is caused by the excessive circulation of the pitta, the bile pigment in the body, and the liver is responsible for the production of the pitta, and excessive uh, it is caused by the impairment of the function of the liver and excessive destruction of the red blood cells, and apart from the yellowness of the eyes and skin, many other symptoms are manifested in the patients, especially just digestion, especially the fatty food is impaired, and consequently the patient becomes physically weak, and there may another is there may itching all over the body. For the treatment of this jaundice disease, there are Abhi Patikara Churn and Arugavati, Arugya Vardhani Vati is well popular in the Ayurveda. In the form, Abhi Patrika Chun is in the use in the powder form, especially from the operculina tapetum plant, the climbing plant, especially in the tropical region, hot regions. And Another is the Arugavardhane Vati is the main ingredient of this is the of this Arugavardhane Vati is the drug plant is the kutki. You know kutki. There are plants all distributed according to the elevational zones. In higher zones, the kutki, especially in temperate region, but in lower regions, terphetum, I already told you, operculina terphetum, or in English it is called that trivrit, or in Hindi nisot. It is widely distributed plant, especially in the hot regions. Uh, the 1 teaspoon one teaspoonful of the churn or a powder is prescribed to the patient twice daily with hot water, and Arugya Vardhanevati means prepared from the kutki rhizome. It is a rhizomatous plant, small herbaceous plant, and mainly found to occur in the higher elevations of the Himalaya. And the tablet around 0.25 gram of each of the tablet, and the two tablets daily daily prescribe for the patient, and followed by the hot water or mixed with the honey. Besides these two plants, apart from these two plants, means Trivrit or Kutki, there are other herbal drugs like the important Bhui Amilika is commonly used in the treatment of
all type of the kamala, all type of the jaundice, and it is a small herb, 1 to 2 feet high, and slender and soft plant, especially grow especially in the rainy and rainy seasons, and sometimes occur up to maybe found up to the winter, but abundantly in the especially in the summers, not summer, in rainy season, and the juice of the plant in the form of the juice, juice 1 teaspoonful of the juice or a swaras, you can say, crush the plant, fresh plants, and take juice, and 1 teaspoonful of the juice should be taken 3 times in a day and mixed with the honey. And you can use also paste of the plant for this purpose, and can also be given in the form of the paste and um, means liquid, yes, for us, or the extract of the plants, and other drugs which also use for the dangers, for the disease jaundice, is the vasa, और वसा का भी कहते हैं इसको, वसा का, और काकामाची. Vasa means is the in the common name, and the botanical name is the Justicia adatura, and kakamachi is the solanum nigrum, and trifla powder. Trifla is prepared from the three drug plants, Hera and Bahira and Amla equally, and this powder is useful because it is disease related to the digestion and liver. Liver control the bile, excessive, but in case of the jaundice, excessive bile can obstruct the yeah, excessive destruction of the RBC, and then pitta appears in the form of the appears in the excess in the blood, and normally it comes out through the urine and stools. आप तो जानते होंगे कि जनरली इसमें क्या होता है कि पिसा पीला आता है. इसका मेन पहचान ये, एक तो स्किन, आइज पीली होती हैं, उसका अलावा यूरिन भी इसका पीला आता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसका. एंड आई विल स्पीक नाउ हिंदी. पीलिया एक ऐसी चिकित्सा स्थिति है या ऐसी चिकित्सा बीमारी है जिसमें कि शरीर में क्या बिलिरुबिन नामक पदार्थ बढ़ जाने से त्वचा और आँखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाता है, और ये मुख्य रूप से लीवर और पित्त नली, जैसे मैंने बोला, बाइल डक्ट और रक्त में खराबी का ये संकेत है, न कि स्वयं कोई बीमारी है. इसमें थोड़ा जो प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब विकार, जैसे एनीमिया में क्या विशेषण ऑफ द पित्त जैसे एनीमिया होता है ना, कि लेक ऑफ द आरबीसी प्रोडक्शन. तो इसी तरह से इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड में कुछ खराबी आने से, या लीवर या पित्त नली में थोड़ा प्रभावित होने से इसमें इसके लक्षण जो होते हैं, जैसे क्या होता है, गहरा पेशाब आना, पेशेंट में थकान और भूख में कमी है, और पेट दर्द शामिल हैं. तो इसके लिए जैसे प्लांट्स बताए मैंने कि कुटकी वगैरह, ये लीवर को भी कंट्रोल करता है, साथ में डाइजेशन को भी. दूसरा ये काकामाची बहुत ही अच्छा प्लांट्स है, ये भी हॉट रीजन में मिलता है. आपने देखा सोलैनम नाइग्रम, छोटे छोटे दाने होते हैं, मकोई बोलते हैं इसको कॉमनली, ज़्यादा मकोई इसका नाम है, काकामाची संस्कृत में है. तो ये बहुत ही मिलता है, एकदम टमाटर के जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, बच्चे भी खाते हैं उनको, बहुत टेस्टी होते हैं. और इसका तो होल प्लांट जो है यूज़फुल है, ड्रग वगैरह, ये पत्तियाँ, इसके फल, और ये बहुत ही उपयोगी हैं, खासकर इस पीलिया में. और वासामूल, ये आप जानते हैं कफ सिरप में तो वासामूल पड़ता है, इसके अलावा इसमें भी ये उपयोगी है. और अदर प्लांट्स में जैसे मैंने बताया त्रिवृत, ओपरकुलेना तरफेथम, ये भी हॉट गर्म जलवायु का पौधा है, बेल की तरह मिलता है, और ये खासकर रोड साइड में और जलाशयों के पास ज़्यादा दिखता है. और ये जड़ी बूटी जो है पेट में कब्ज़ को भी ख़त्म करती है, विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालने के लिए ही जानी जाती है.
और इसमें रेचक गुण यानी लेग्जिटिव गुण होने के कारण यह पेट को साफ रखती है। तो इसके लिए जो डाइट बताई है कि खासकर जो है स्वीट थिंग्स मतलब मीठी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए, लिक्विड स्पेशली जैसा शुगर केन और क्या ऑरेंज जूस एंड ड्राई ग्रेप्स, यानी कि मुनक्का है वो ले सकते हैं आप। और उसके अलावा इसके लिए मेन जो होता है बटर मिल्क जिसको बोलते हैं ना, कर्ड इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ बट बटर मिल्क, यू नो, जो कर्ड को मथ करके लोग जो बनाते हैं ना बटर मिल्क, वो बहुत ही उपयोगी होता है ठंडा, और उसको काफ़ी मात्रा में लेना चाहिए कि जिससे काफ़ी यूरिनेशन मतलब पेशाब ज़्यादा है, फिर वो पीला जो है पदार्थ जो वाइल के प्रोडक्शन से ये प्रॉब्लम होती है पित्त की, तो वो सब बाहर निकल जाता है पेशाब के रास्ते। और दूसरा इसमें यह है कि पेशेंट को जो है अधिक क्वांटिटी में जूस वगैरह लेना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया ऑरेंज जूस ले सकता है, शुगर केन ले सकता है। और इसके अलावा इसमें जो है जॉन्डिस जो है मेनली जो है आप तो जान रहे हैं बिलीरुबिन की वजह से होता है ना, एक्सेसिव बिलीरुबिन इन द ब्लड which occur when the liver cannot efficiently process और excrete yellow pigment। तो इसको कैसे निकाला जाए उसके लिए आप लिक्विड लें और ये बटर मिल्क लें, माने उसका जो मट्ठा बोलते हैं लोग अपने अपने एरिया के अनुसार, तो उसको लेना चाहे। और एक मिलेट्स भी ले सकते हैं, जैसे फिंगर मिलेट्स होता है, फिंगर मिलेट्स तो नहीं लेकिन बॉर्न यार्ड मिल्क होता है जिसको बोलते हैं कहीं पे झंगोरा बोलते हैं या कहीं ऐसे, तो उसको अगर आप ले लेंगे उसके साथ तो काफ़ी शरीर के लिए ठंडा होता है और जल्दी पेशेंट को आराम मिलता है। धन्यवाद जी, प्लीज लाइक